स्वागत है आज तक में। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज हमारे साथ जुड़े हैं भूमि पेडनेकर एंड राजकुमार राव, जो अपनी अपकमिंग फिल्म भीड़ के बारे में हमसे बात करेंगे। हेलो, वेलकम, सो नाइस टू हैव यू ऑल हियर। Thank you. पहले तो दिस इज योर सेकंड कोलैबोरेशन, Yes. yours and his after Badaidu and now Bheed, and both are very unconventional films. आप लोग ने दोनों ने डिसाइड करके रखा है कि आप लोग ऐसी फिल्म्स के लिए साथ में काम करने हमने आएंगे? डिसाइड किया हम जब भी फिल्म करेंगे वो बी से शुरू होगी, उसमें राज कॉप होगा और वो बहुत ही स्पेशल फिल्म होगी। राज, आपका क्या कहना है? नहीं, हमने ऑफकोर्स ये डिसाइड किया कि हम जो भी फिल्म करेंगे साथ में उसकी कहानी में बहुत दम होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को बहुत प्यार है सिनेमा से, और उसमें अगर आप 2-3 महीने देते हैं एक फिल्म को तो इट बेटर बी वर्थ इट। तो हमने डिसाइड किया कि जो भी फिल्म करेंगे साथ में इट हैज़ टू बी स्पेशल। ट्रेलर देख के तो बहुत अच्छा लगा, यू नो देयर वर सो मेनी टाइम्स दैट आई कुड रिलेट टू द यू नो देयर इंसिडेंट्स। मुझे आप लोग से जानना है, व्हाट वाज व्हेन यू ऑल वर शूटिंग, व्हाट वर द थिंग्स व्हेन यू सॉ अराउंड दैट कनेक्टेड विथ यू, बिकॉज यू नो हम सब वी ऑल हैड बीन इन दैट सेम सिनेरियो। आई थिंक सो बिकॉज हम लोग जब शूट कर रहे थे वी वर आल्सो शूटिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक, बट ऑफ कोर्स परमिशन थी कि शूट कर सकते हैं आप विद लॉट ऑफ प्रिकॉशन, तो हम सब उस चीज़ का ध्यान रख रहे थे। बट जस्ट सीइंग यू नो वो सब विजुअल्स हम सब ने देखे हैं, जब माइग्रेंट वर्कर्स पैदल चल के जा रहे थे, सूट केसेस पे बच्चे थे, साइकिल पे बच्चे थे, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था उनको, बिकॉज लॉकडाउन तो ज़रूरी था ही, लॉकडाउन तो करना ही था, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो वो विजुअल्स हमने देखे थे, पर उनके बाद उनके साथ क्या हुआ वो आई थिंक हम लोग को पता नहीं था, तो वो हमारी फिल्म के ज़रिए हमें कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफकोर्स बहुत टफ टाइम था हम सब के लिए, हम सब ने अपने अपने जितना हो सकता था किया, हेल्प की लोगों की, गवर्नमेंट ने बहुत किया, बहुत काम किया। तो आई थिंक वो सब चीज़ें विजुअल जो है हमारे दिमाग में बार बार वापस आ रहे थे कि कैसे हम भी देखते थे कि यू नो बाहर नहीं जा सकते हैं, बॉर्डर्स आर शट एंड देयर सो मेनी पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। तो एक रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज था। भूमि, आपके लिए? जी, एग्जैक्टली एज राज सेड कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो बहुत ही प्रोलॉन्ग चला। हम सब के लिए अलग था। We were not prepared. We were not prepared at all, and globally we were not prepared. This is not something that only happened in our country. This was a global phenomena, and there were many countries that went into a state of lockdown, because when you have such a massive population, what else are you going to do, right? But as Raj rightly said, ये कहानी तब शुरू होती है जब एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे बहुत ही अनसर्टनिटी थी, और उस अनसर्टनिटी के सिचुएशन में जो अलग अलग किरदार आप फिल्म में देखते हैं, उनकी क्या जर्नी रही, आप उनकी जर्नी से क्या सीखते हैं। बट ओवरऑल जो थीम है हमारी फिल्म का, वो होप है, वो सॉलिट्यूड है, वो कैसे ह्यूमैनिटी साथ आती है इन अ टाइम ऑफ ट्रेजेडी, जहाँ पे आप अलग अलग हीरोज़ का जन्म होते हुए देखते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, क्योंकि वो सिचुएशन वो करवाती है, वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, वो किसी एक ऐसा इंसान हो जिसने एक सिंगुलर इंसान की हेल्प की हो, अलग आप अपने अंदर एक हीरोइज्म ढूंढते हैं, इन अ टाइम ऑफ ट्रेजेडी, एंड दैट्स व्हाट भीड़ इज अबाउट। स्पीकिंग अबाउट दैट, आप दोनों ने ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो बहुत हेल्प की है लोगों की, यू नो यू ऑल हैव गॉन आउट ऑफ योर वे एंड डन। डू यू ऑल रिमेंबर एनी इंसिडेंट वेयर नो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हेल्प आउट समवन ड्यूरिंग दैट टाइम? ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको याद है? Well, it was not easy, but you all have done it. I think there have been moments, of course, where like trying to arrange a bed for someone, and there have been moments where you could have managed to arrange a bed, but there have been moments where somebody is so desperate and helpless, and you're trying really hard, but there's just no way you could manage it. So I think that's a situation that you don't want to be in, because it's very helpless. It makes you very, very sad that you can see that somebody is in such a need for something and you are not being able to provide that. मुझे एक किस्सा जो मैं कभी एक्चुअली आई डोंट थिंक आई एवर बी एबल टू फॉरगेट इट इज़, मैं एक फैमिली के साथ काम कर रही थी जहाँ पे द मदर एंड द सन बोथ वर क्रिटिकली इल, एंड देयर वाज ओनली वन वेंटिलेटर अवेलेबल, एंड द डॉटर वाज इन टच विद मी, बिकॉज शी वाज डूइंग एवरीथिंग, और वो मुझे बोल रही थी कि आप मुझे बोलो मैं वेंटिलेटर किसे दूँ, so as a family they had to take some really tough calls. So it just like and there were many instances, there were also many instances of hope,
where like a baby was born in these times, where like the supplies were so less. But yeah, they were like, it It was was a very difficult time. quite, yeah, But overwhelming. since we're talking about hope also, मैं अपना personal experience भी बताती हूँ. I stay alone. So I was like, just 15 days before the lockdown, I had got a small pet. Just 15 days. And then उसके बाद only he and I were there and there was nothing. So I think that was a blessing in disguise from Yeah, somewhere. yeah, exactly. I want to Yes. know from you both, ऐसा कुछ miracles, ऐसा कुछ आपने आपने भी experience किया during that period? Miracle. I don't know if miracle कुछ हुआ कि नहीं, पर हाँ जितने लोगों की uh, जान बच पाई. आई थिंक जितने लोग जो क्रिटिकली भी इल थे, मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त क्रिटिकली इल थे, कैसे दे केम आउट स्ट्रॉन्गर, दे केम आउट अलाइव. फॉर मी दैट वाज अ मिरेकल. एवरी लाइफ दैट गॉट सेव्ड वाज अ मिरेकल. I think I completely agree because I think the fact कि हम सब हमारे घर में safe थे वही एक बहुत बड़ा miracle था, because that wasn't the scene with a large part of the population, कि हम हमारे पास हमारी छत थी, खाने का सप्लाई था, हमें ये पता था कि हमारे लव वन सेफ है. That was a miracle because things could go otherwise as well. Right. What has this pandemic taught both of you all personally, if I may ask you? ऐसा कुछ आपने कुछ नया समझा ये लाइफ, जैसे हम बोलते हैं ना, we just think about how things are. Yeah, I feel like how everything is so uncertain. I think you got this one life. Um, you better live it the way you want to and listen to your heart and just spread love. I think just be kind to people. Yeah. I think for me the biggest learning was कि as a race humanity we feel कि we are invincible, कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, लेकिन नेचर हमसे बड़ा है. हमसे बड़ी फोर्सेस ऑफ नेचर है जो हमसे बहुत बड़ी. और आई थिंक एक जो हमें हम्बल होना बहुत ज़रूरी था. आई थिंक वो मैंने सीखा. मैंने बहुत एम्पथी सीखी इस टाइम पे कि एम्पथी से बड़ा कोई ह्यूमन इमोशन नहीं हो सकता. एंड आई जस्ट फील कि हेल्थ इज़ वेल्थ. दिस वाज माय बिगेस्ट लर्निंग. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. आई थिंक इतने लोगों को मैंने एक हेल्थ जर्नी की तरफ, एक मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जर्नी की तरफ जाते हुए देखा. वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी. What were the challenges when you were shooting? Because आप जैसे आपने कहा कि आप लोग कोविड के टाइम, पैंडमिक के टाइम ही शूट कर रहे थे, ऐसा कोई तुम मोस्ट चैलेंजिंग आई थिंक सिचुएशन? रेगुलर टेस्ट कर रहे थे हम लोग. पूरे क्रू की रेगुलर टेस्टिंग चल रही थी. एंड ऑफ स्क्रीन ऑफ कोर्स मास्किंग. द मोमेंट यू से कट यू नीड टू बी इन अ मास्क. द और जो भी बबल. गाइडलाइन मिले गए थे ऑफ कोर्स वो हम फॉलो कर रहे थे. एंड लकीली कोई आउटब्रेक हुआ नहीं था हमारे साइड पे, क्योंकि हम वी वर रियली एंड ट्राइंग टू बी एज केयरफुल एज पॉसिबल. एंड स्पेशली जब इतने सारे जूनियर कास्ट एक्टर्स हों, उनका भी टेस्ट रेगुलरली करना, उनको हैंडल करना, आई थिंक दैट वाज डेफिनेटली टफ. बट आई फील अगर आप एक सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अनुभव सर ना उनकी फिल्म में सिनेमैटिक ट्रीट भी होती है, विजुअली जैसे अपनी फिल्मों को ट्रीट करते हैं. तो उन्होंने ये फिल्म लिटरली हम सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक ही शूट करते थे. तो 6 घंटों में प्रोडक्टिव होना टू द मैक्सिमम विद सच अ बिग कास्ट एंड लाइक वाज आई फील लाइक या. But it's very different also. ये पूरा ब्लैक एंड वाइट जैसे जी. हमें दिखाएगा. What was the idea behind this? ये अनुभव का ही आइडिया था या? ऑफ कोर्स उन्हीं का आइडिया था, उन्हीं का कॉल था ये. इसके दो तीन रीजन है. एक तो कि इट्स वेरी आर्टिस्टिक. आई थिंक इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन. इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम व्हाटएवर वी सी. एंड आई थिंक आल्सो आई वाज द डे ही टोल्ड मी, आई एक्चुअली went back and realized that there are so many international music videos that we see these days which are shot in black and white, and it is something very soothing to the eyes. But of course there was another reason that he thought, like when we say any pandemic or anything that like a tragedy that happens, it's never colorful. It's always very black and white. It's always very gray. Those memories, those visuals. So I think that was also the reason he wanted to capture all this in black and white. Right. How was working with Anubhav? He, like you said, no, he has a very different way of approaching his characters, his shoot. How was it working with him? Honestly, it was very easy because he spent so much time in writing, and his detailing is to the T. So you just have to be honest with the written material. Of course, you work on your character and you come on set, but then it's all there. You just have to
just follow his vision, and you'll come out with a very special film. This is your first time collaboration with First him, time with right? him, yeah. Bhumi, your experience? You know, I think he is such a passionate filmmaker. You know, he is also backed by a lot of work that he does, you know, on his scripts, on his characters. He has just so much clarity. You know, he's a filmmaker in the best way the term describes it. So I feel like as an actor who's constantly trying to learn and grow, you know, in their craft and in their, like, you know, as a Right. human being as well, you need to experience Anubhav Sir's school of cinema for sure. This looks very different from all the work that he's done so Yeah. far, and it is also touch. You connect because it Yeah. is based on a true Yes. story what we have faced. I want to know because Pankaj sir in an interview just recently mentioned that don't judge the film before just by the trailer. Yeah. Wait till the trailer comes. Correct. What do you have to say when there are a lot of people who are saying कि नहीं यार ये anti-national film है? What? Really? Yeah. ये There term are तो नहीं सुना था मैंने। there are ये people अभी who are तक saying- मुझे तो ये हाँ, ये कोई ऐसा This in one of the interviews, Pankaj sir has said. No, but who said film anti- नो मे बी वो एक ओपिनियन अपना दे रहे होंगे, हम तक कभी ऐसा आया नहीं. पहुंचा इनफैक्ट नहीं है. भीड़ के ट्रेलर के बाद सी अ पीस ऑफ आर्ट will always be loved and some people might dislike it. It is okay. That's the idea of creating art. No, there are scenes in the film actually where it talks so beautifully about our country. Yeah. There are so many scenes and how we all are as Indians have come together, and also around the globe, people did come together when we were going through the worst crisis of our lives. I think it makes me very proud that how as a country we came together. Of course, as I said, supported by our government and what they were doing at that point of time, which is not easy. Yeah. To manage 1.4 billion people It's not easy. during during something which we had no idea about is not easy. So I think they did a great job, and also as people, how we came together. It makes Yeah. me so proud as an Indian. But that's what Pankaj sir also said. Trailer से मत जाओ, आप picture Yeah. देख लो और फिर अपना opinion है जो वो Correct. बताओ. Yeah. What do you have to say when people just negative वो spread करने के लिए they are just waiting for one reason to Yeah, just but go. I don't know what to say because it's just not about film trailers. I feel it happens on everything today. People have a very strong opinion. हम एक photo डाल दें Instagram में, इतनी trolling होती है. So I feel like it just become a way of life. I think हमारे ऊपर है as individuals कि हम उससे affect होना चाहते हैं या नहीं affect Yeah. होना चाहते. You know, आपका we take your opinions with like. We take your appreciation and whatever if you don't it's like a- something correct. with It's a open constructive arms. criticism, then of Yeah. course it's always welcome. If it's just for the heck of it, then I don't You think just it even. move on. Yeah. Yeah. But now does आपको इतने साल हो गए इंडस्ट्री में ये सब ट्रोलिंग एंड नेगेटिविटी आपको बॉदर करते हैं or you have just got You used need to to do it your now? work. Yeah. You The need to work do is your the work. only thing that'll keep you sane and it won't let you get affected by all the And it's all negativity intent. around. Like Yeah. it all comes down to intent. Like what आपकी नीयत क्या है वो काम करने की. मुझे पता है कि हमारी नीयत थी कि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस दें, एक अच्छी कहानी का हिस्सा बने. उस नीयत से हमने ये फिल्म किया और कोई किसी के दिमाग में और कोई तो नीयत थी नहीं. I don't think so. So I think जब तक आपकी नीयत साफ है ना, then you can just keep working. Lastly, I really would like to ask about the Oscars, which we are still celebrating Yes. the two Oscars that we have got. What are your reactions to We that? are thrilled. We are so proud of both RRR and The Elephant Whisperers. I think both are such special, unique films, and the beauty of cinema, like such two extreme genre of film cinema, and they both are being celebrated at such a big, platform. Do you want to add something? I think for me, to start off with, as an Indian, to see the representation that I always missed. As a kid, every time I tune into the Oscars, I miss seeing my films there, and I wondered why, because we create such beautiful cinema. And finally, being recognized on, after many, many years, being recognized on such a big platform gives me a lot of hope that a lot more of our films, would be loved universally because our cinema deserves it. And I feel very proud that our friends have created history. And a song like Natu Natu that Yeah. I'm actually obsessed with is something that's Can you had. perfect the step? No, I can't. I can barely perfect my film steps. Natu kisi aur Natu Natu is impossible. Right. Sorry, I cut you. When No, you no, said no. something. That's what I wanted to say. That we are very proud. We are proud Indians. We are proud actors, Yeah. and it gives us a lot of hope
that we'll just see more of our films being loved and celebrated. Great. Well, on that note, thank you so much हमसे Thank बात करने you. के लिए, and Thank you all so the very much. best for Bheed. Just Thank looking you. forward to it. Thank you. Thank you.